So hello everyone and welcome back to our YouTube channel. Today what we are going to discuss is about Maharashtra set examination. The Maharashtra set examination is to be scheduled on 15th June of 2025. Today we are going to discuss about the syllabus, the exam pattern and marking scheme for the paper 1 of this Maharashtra set examination. So if I talk about the marking scheme of this examination, the marking scheme or the paper is divided into two portions. The first portion is what you called as paper 1, which is generally a general paper, and the second paper is based on the subject specific paper. Like for example, if you are having your subject in post graduation as suppose say maths. So for this maths there will be one paper which will be completely based on your mathematics, and the first paper which will be common, that paper is what you called as जनरल पेपर. अब इस जनरल पेपर का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल if I talk about the marking scheme, the paper 1 is of suppose say 100 marks, और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है that paper is of what 200 marks. So totally the total paper of MS set examination is of 300 marks, and for you to get qualified based on subject, आपके जो भी कट ऑफ है वो जनरली चेंज होता है. बस मोस्ट प्रोबेबली सपोज आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेट अस कंसिडर दैट नियर अबाउट आपको 170 मार्क्स तो लगेंगे ही लगेंगे टू गेट क्वालिफाइड. नाउ इन ऑर्डर टू स्कोर दिस 170 मार्क्स यू आर हैविंग एन ऑप्शन ऑफ 300 मार्क्स, आउट ऑफ विच अगर आपका कमांड बहुत बेहतरीन है सब्जेक्ट के ऊपर, so from that you can easily score out of 200, say suppose say you are scoring 110 marks or less or greater, so still you are requiring 60 marks. So in order to get that thing आपको पेपर 1 को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. नाउ इफ आई वांट टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस, मुझे सेट क्वालिफाई करने के लिए 2 अटेम्प्ट्स लगे थे. इन फर्स्ट अटेम्प्ट व्हाट आई डिड बेसिकली, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सब्जेक्ट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट था एंड आई डिडंट हैड एनी इशू रिगार्डिंग द सब्जेक्ट. बट मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी यहाँ मैंने टाइम अलॉटमेंट भी लिखा है, like for paper 1 I am having a time of suppose say 1 hour, and that is approximately 60 minutes. So in that 60 minutes what you have to do in this 60 minutes, you have to attempt near about 50 questions, जहाँ पे आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ये सब चीज़ें आती है. नॉट ओनली रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, बट यू आर ऑल्सो हैविंग सम टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, लाइक आपको रीजनिंग, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें, डाटा इंटरप्रिटेशन भी सॉल्व करना पड़ता है. सो on an average you are getting 1 minute and 10 seconds to in order to solve a particular problem or particular question. तो वहाँ पे हम लोगों की काफ़ी सारी गलतियाँ होती है. Now, in order to overcome those things, I will be discussing few tips and tricks जिससे आप easily इन सब चीज़ों को sort out कर सकते हैं. But before getting into that, आपको करना क्या है कि आप अपने subject specific paper को अच्छा सा time दो. But with respect to that, start giving approximately 1 hour to paper 1 also. डेली अगर आप आज से भी 1 आवर पेपर 1 को प्रॉपरली करते हो तो यू कैन इजीली स्कोर दिस 60 मार्क. लाइक मैंने जो भी एनालिसिस किया है पेपर 1 का, आई कैन गारंटी यू इफ यू गो थ्रू माय लेक्चर्स दैट आई विल बी अपलोडिंग, नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड दैट आई विल बी टेलिंग यू हाउ वी विल डू दैट. सो लाइक अगर इन सब चीज़ों को मैं इजीली एक्सप्लेन करूँ तो यू बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग टू पेपर्स where paper 1 will be of 100 marks, paper 2 is of 200 marks, and totally everything comprises of 300 marks. And time allotment is simple. There will be 50 questions in paper 1 which will be of 100 marks, मतलब 2 mark का एक question होगा, that will be allotted a time of 1 hour. Then you are having 100 questions in subject specific paper, that will be also of 200 marks, and the time allotment will be again what 2 hours. So let us get into understanding the syllabus of this paper. So if I want to move out, so what is the syllabus? Syllabus is specifically mentioned on the MSCET website. Now syllabus को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो you are having approximately there are 10 units. 10 units, or I can term them as 10 modules are there.
What 10 modules are there? So from this, the first module will be of, say, teaching aptitude. Second module is of research aptitude. Third one is of comprehension. Fourth one is termed as communication. Fifth one is mathematical reasoning and aptitude. Again, you are having a logical reasoning portion, data interpretation, ICT is there, people development and environment is there, and higher education system is there. Now, I know most of the students come from different backgrounds. Like, for example, some of the students may be having physical sciences as their core subject. Physical sciences, in the sense, physics will be there, suppose say, or mathematical sciences is there. Definitely, chemical sciences will be there. Again, the students from life sciences and arts and commerce faculties will also be there. So now let us break down this syllabus properly कि किस तरीके से हमको proceed करना है. Now, whenever I talk about the syllabus, this pattern, see what the patterns is there. Let us understand the pattern. Like first two modules या first दो unit को अगर मैं देखूँ तो teaching aptitude and research aptitude is there. Now, whenever I talk about research aptitude, like according to NEP, what has happened? Research methodology को एक proper weightage दिया गया है syllabus में. You go for any university that comes under this Maharashtra SET examination, तो most of the universities में आपको research methodology, that is RM, is a compulsory subject now. So if I consider you people, like आप एक तो एक हो सकता है कि आप सेकेंड ईयर में होंगे एमएससी के या पास आउट होंगे, लेकिन आपने ये रिसर्च मेथोडोलॉजी को यू हैव गॉन थ्रू इट. नॉट ओनली यू हैव गॉन थ्रू रिसर्च मेथोडोलॉजी, बट आपकी ओजीटी, दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग इज देयर, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट्स इज देयर, जिसमें हम रिपोर्ट्स राइटिंग वगैरह करते हैं. तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टाइप्स को हमें इस यूनिट में समझना है, दैट वी विल प्रॉपरली डिस्कस आउट. Again, this teaching aptitude is completely based on simple understanding कि as a particularly as a teacher या as a students कौन से factor matter करते हैं while teaching and while understanding. Okay, so these two topics will be basically common to everyone for understanding research aptitude as well as what your teaching aptitude. Now, when I move away from these things, third module, which I specifically feel is a scoring module, that module is of comprehension. Like अभी comprehension basically क्या है आपको वो समझना पड़ेगा. Comprehension is basically you will be given a particular paragraph, जो paragraph के base पे you will be having certain questions. And what now this, why I am saying this is scoring, like when you understand a particular thing, उस चीज के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस जल्दी से आंसर करना इजी होता है. Like you will be given a suppose a 10 to 12 line paragraph, and from that paragraph you have to extract 5 answers, and I will be telling you how we are going to extract the answers as well. Now, the most important thing is you are having a unit based on communication, and this unit is again important क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट है, इसके कंटेंट्स कम है और बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं. तो कम्युनिकेशन विल बी द वन दैट वी विल बी टारगेटिंग मोर. देन द स्टूडेंट्स कमिंग आउट ऑफ अनदर लाइफ साइंसेस बैकग्राउंड, दे टेंड टू फियर दिस 3 यूनिट्स. कौन से 3 यूनिट? तो एक मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. सो हम लोग कोई सपोज से फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग या कोई अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो इफ यू गो फॉर दोज थिंग्स कि बैंकिंग में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टाइम वर्क के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और फिर वहां से प्रिपरेशन करेंगे, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन विच इज फॉर टीचिंग एज वेल एज रिसर्च. तो हमें उस दृष्टिकोण से ही प्रॉब्लम्स को समझना है, एंड दैट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व क्योंकि इससे कुछ बेसिक फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं. लाइक अगर मैं डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, वेरी सिंपल. Now, so this is what we are going to target. Again, information and ICT, that is communication technology, that is ICT. ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि what is computer, what is MB, what is KB, फिर उसके conversions कैसे हैं and so on. So these 2 units that I feel that communication and ICT are the one that we will be targeting. Apart from that, हम लोग इन 3 units के ऊपर भी proper काम करेंगे. फर्दरमोर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, इसके अगर आप कंटेंट्स को देखेंगे सिलेबस में तो बहुत ज्यादा दिखाया गया है. बट इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चंस यू विल फील दैट on to certain specific terms and certain specific
चीजों पे ही क्वेश्चंस आते हैं. नाउ लेट अस ब्रेक डाउन द सिलेबस. अगर आपको सिलेबस ब्रेक डाउन समझाऊंगा कि यू आर हैविंग 10 मॉड्यूल्स, 10 यूनिट्स, एंड ईच यूनिट विल कैरी 5 मार्क्स, like 5 questions, sorry, each unit will be carrying 5 questions, and each questions will be of 2 mark. So let us see now what happens if I want to learn about teaching aptitude. तो teaching aptitude में अभी इतनी सारी terms यहाँ पे दिए गए हैं. Like you starts from teaching, like what is teaching, concept of teaching, objectives, levels of teaching, what is memory level, understanding, reflective method of teaching है, characteristics and basic requirements, like learner characteristic क्या होना चाहिए, फिर टीचिंग में कौन से फैक्टर्स आपको रिलेट करते हैं, लाइक व्हाट मेथड्स वी ऑप्ट, वेदर वी ऑप्ट अ टीचर सेंटर्ड मेथड और वेदर वी ऑप्ट अ लर्नर सेंटर्ड मेथड, ये सब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली. लाइक व्हाट इज ऑफलाइन मोड, व्हाट इज ऑनलाइन मोड्स ऑफ टीचिंग. अभी स्वयं के पोर्टल के बारे में आप सबको पता है, एनपीटीएल स्वयं से बहुत से कोर्सेज हम लोग करते हैं. लाइक स्वयं प्रभा इज देयर, दिस एमओसीसी इज देयर एंड सो ऑन. फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम किस तरीके की होना चाहिए, लाइक ट्रेडिशनल मेथड जहाँ चॉक वगैरह यूज करते थे, या मॉडर्न मेथड जिसमें हम प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं, या फिर आईसीटी मेथड, दैट इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड. सो द इवोल्यूशन इज कंप्लीटली हैपनिंग. तो हमें पता है कि हर एक चीज में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो उन चीजों को हमको समझना है. फिर इवैल्यूएशन सिस्टम जो हम करते हैं स्टूडेंट का, कि किस तरीके के इवैल्यूएशंस कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से करना है एंड सो ऑन. तो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट करना है कि सेमिस्टर एंड कंटिन्यूअस करना, सेमिस्टर एंड करना है एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. लाइक अभी अगर थोड़ा फार अगर किसी को एनईपी के बारे में पता होगा तो आपको पता है कि एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम होता है जिसे सीआईई कहते हैं, और एक सेमिस्टर एंड इवैल्यूएशन सिस्टम होता है जिसे यस डबल ई कहते हैं. सो दीज आर अगेन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम दैट वी डू. कोई कोई एग्जाम कंटिन्यूअसली हम लोग लेते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह लेते हैं, जिसे कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो गया. जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है एक सेमेस्टर के बाद, तो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशंस हो गया. तो उस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस को हमको समझना है. फिर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या है, तो बहुत सी चीजें इसमें दी गई है. तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से किस तरीके से प्रिपरेशन हमको करना है. नाउ अगेन इफ आई वांट टू मूव टू सेकंड यूनिट, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड. इसमें भी आप देखेंगे कि रिसर्च का मीनिंग हमें समझना है, व्हाट इज रिसर्च, कितने टाइप के रिसर्च होते हैं वो समझना है, व्हाट मेथड ऑफ रिसर्च इज देयर. लाइक अभी साइंस साइंस वाले बैकग्राउंड जिनका होगा उनको पता है कि रिसर्च करने के लिए हमको बहुत से एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं. देन यू गो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स वेरीफाई करना एंड सो ऑन. सो लैब वर्क इज देयर. फिर कोई रिसर्च का टाइप है डिस्क्रिप्टिव टाइप है, कि कोई एक टॉपिक लेके उसके बारे में डिस्कशन करो, लाइक एमए वगैरह वाले जो करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, कि को अलग अलग प्लेसेस पे गए, वहाँ का डेटा कलेक्ट किया, उस पूरे डेटा को एनालाइज करके फिर उन्होंने रिसर्च किया. देन यू आर हैविंग क्वालिटेटिव टाइप रिसर्च इज देयर, क्वांटिटेटिव टाइप रिसर्च इज देयर. फिर रिसर्च को किस तरीके से स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है हम लोगों को, लाइक हम पता है कि लिटरेचर सर्वे पहले करना पड़ता है, फिर टॉपिक टॉपिक देखेंगे, फिर लिटरेचर सर्वे करेंगे, फिर उसके पैरामीटर्स को समझेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड सो ऑन. सो दैट इज द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन रिसर्च. फिर थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग जो होता है, हर एक रेफरेंसिंग के लिए फॉर्मेट अलग होता है, हर एक थेसिस के लिए हमें पर्टिकुलर वे को फॉलो करना पड़ता है. देन यू आर हैविंग एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च. अभी जैसे कि मान के चलो आपको पता है कि प्लेगरिज्म्स होते हैं, एच इंडेक्स होता है, आई इंडेक्स होता है एंड सो ऑन. सो ऑल दिस पैरामीटर्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फिर रिसर्च के एथिक्स क्या होना चाहिए, कि किसी का भी काम लेके किसी का भी काम चुरा के काम नहीं करना है, तो रिसर्च के स्पेसिफिक एथिक्स होंगे जो फॉलो अप हम लोग करेंगे इन यूनिट नंबर. देन इफ आई मूव टू थर्ड वन, तो यह तो मैं कॉम्प्रेशन के बारे में आपको बोला ही था कि एक पैसेज गिवन रहेगा और पैसेज में से हमको कुछ सवाल को सॉल्व करना है. The fourth unit which I feel is very simple and very basic to understand, that is communication. Communication हमको पता है कि अभी जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आपके साथ, दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं खुद ही बात कर रहा हूँ, फिर आप लोग एक साथ समझोगे उसको या सुनोगे, तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज वन वे कम्युनिकेशन. फिर टू वे कम्युनिकेशन भी होता है जो क्लासरूम में अडॉप्ट करते हैं हम लोग, कि स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, टीचर भी बोल रहे हैं, एंड वी आर कम्युनिकेटिंग. फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है, इंटर कल्चर क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो इनके मीनिंग्स को हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे. फिर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कि कोई भी कम्युनिकेशन किस तरह से ब्रेक डाउन होगा. फिर मास मीडिया मतलब क्या है, सोसाइटी. अगर मास मीडिया की मैं बात करूँ तो लाइक न्यूज़पेपर इज देयर, दैट इज वन काइंड ऑफ मास मीडिया, की उनको कुछ इंफॉर्मेशन लिखी
और सबको सर्कुलेट कर रही है। तो अगेन न्यूज आर देयर, अलग अलग मीडिया सोर्सेस है, लाइक अगेन यू आर हैविंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड दोस अगेन आर द सोर्सेस, दैट इज मास मीडिया सोर्सेज, जो सोसाइटी को कुछ ना कुछ बेनिफिट भी दे रहे हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी दे रहे हैं। तो दैट पैरामीटर्स वी हैव टू सी। अगेन इफ आई मूव टू यूनिट नंबर 5, जहाँ पे बहुत से लोग बैक डाउन कर जाते हैं कि इसको स्किप कर देंगे हम लोग, कि मैथमेटिकल है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, इसको स्किप करेंगे। बट ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। हम लोग रीजनिंग के टाइप को समझेंगे। वी विल सी व्हाट इज अ नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप। अगर मैंने इसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया, अगर मैं पुराने क्वेश्चंस को देखूं, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम द लेटर सीरीज। और कभी कभार कोडिंग और रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता है। अब नंबर सीरीज भी आएंगे, तो नंबर सीरीज में भी एपी लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होंगी, जीपी प्रोग्रेशन दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीजेस विल बी देयर। देन यू आर हैविंग दिस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, कि फ्रैक्शंस क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। परसेंटेज से बहुत से सवाल आते हैं। अगर आप प्रोपोर्शन को समझ गए तो परसेंटेज आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से भी कभी कभार क्वेश्चन आया है। इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग से इतने सवाल नहीं आते, एवरेज इससे सवाल आता है। So we will see whatever problems we are able to solve out. Now the unit number 6 is logical reasoning. अब इसमें भी बहुत सारी चीजें दी गई है, but mostly if I see the questions comes from the Venn diagram portion. तो वेन डायग्राम, और यहाँ पे बड़े अलग अलग सवाल, अलग अलग वर्डिंग्स यहाँ पे दिए हैं, व्याप्ति करके, अनुपमा, अनुमान, and metaphysics and so on. So most of the questions comes from the Venn diagram unit or Venn diagram portion. Now for this data interpretation again is very simple to solve. Data interpretation से आपको बेसिक से सवाल आएंगे, लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट से बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। तो पाई चार्ट या टेबल चार्ट को आप प्रॉपरली इंटरप्रेट करेंगे और समझेंगे कि पाई चार्ट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लाइक 10th 9 10th में भी पाई चार्ट के बहुत से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन हम लोग वो चीजें भूल जाते थे। वी विल जस्ट रिकॉल दैट डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर गवर्नेंस एंड डाटा, इन सब चीजों को हम एनालाइज करेंगे। Now when I talk about unit number 8 again, which is again simple, that is ICT. हम लोग आईसीटी भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस वही पैरामीटर्स को हमें रिकॉल करना है, कि इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या है, ईमेल क्या है, वाईफाई क्या है, तो वाईफाई के रेंजेस कैसे होते हैं, उसको किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है, कि कुछ पर्टिकुलर एरिया तक जो लिमिट करेंगे वो पर्टिकुलर नेम का वाईफाई होगा, उसके बाहर जाता है तो पर्टिकुलर नेम का वाईफाई होगा, एंड सो ऑन। लाइक इंटरनेट की बिल्डअप कैसे हुई थी, कि कौन सा सोशल मीडिया पहले आया था, जैसे ऑरकुट आया, जीमेल आया, कि स्नैपचैट आया, एंड सो ऑन। तो उसकी हायरार्की हमें बनानी पड़ेंगी, जिससे हर बार सवाल आता है कि पूरा सीक्वेंस आपको दिया गया होगा और सीक्वेंस को फिल करना पड़ता है। तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ICT and governance will be discussing, digital initiatives we will be discussing, like what is Swayam, what is mock, and so on. Again, the ninth unit is based on people development and environment. अगर इसमें से आप ब्रेकआउट करो तो देखिए यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक क्वेश्चन आता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से एक क्वेश्चन आता है, पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आता है, देन यू आर हैविंग एनर्जी सोर्सेज से मे बी देर विल बी अ क्वेश्चन, बट देर विल बी अ डेफिनेटली क्वेश्चन ऑन दिस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर नेशनल एक्शन प्लान, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एंड सो ऑन। इस पे कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस यूनिट को आप ब्रेकआउट करो तो प्रॉपर क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली देयर। एंड द लास्ट यूनिट इज ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमें पुराने जमाने की टीचिंग मेथड्स या टीचिंग को समझना है, एंड देन वी विल बी फ्रॉम दैट एंशियंट मेथड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द मॉडर्न मेथड. So that is what we have to analyze in this unit number 10. So maybe from Monday I will be definitely uploading lectures based on proper units. Like I will be starting it from communication, where I will be doing it for ICT. Then we will figure out what units we need to understand. So to all the aspirants that are preparing for this Maharashtra set examination, do not worry about the paper one. Whatever content or whatever notes I will be giving you, that will be ample enough for you to qualify this exam. Just do one thing, whatever the old question papers are there, उनको आप collect कर लो, near about 6 to 7 papers, और उसमें से properly unit wise questions को आप analyze करना शुरू करो. I will be telling you how to analyze. Maybe tomorrow I will be uploading a lecture कि किस तरीके से हमको पेपर को analyze करना है. And from that
वी विल बी फिगरिंग आउट कि किस तरह से प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं. सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी गिविंग यू अ लिंक ऑफ व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे कंटिन्यूसली मैं नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा. सो गुड लक टू एवरीवन. स्टार्ट प्रिपेयरिंग. थैंक यू.